स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है मावरा हुसैन। मुझे ऐसा क्यों लगता है कभी कभी कि उर्वा और मावरा ट्विन्स हैं, तो आज जानेंगे क्या वो ट्विन्स हैं या सोलमेट्स हैं। आइए मिलते हैं मावरा हुसैन से। कहाँ रही हो इतने अरसे, हम लोग कितना ढूंढते रहे। Where have you been? When you first called me for this show, मैं अपने LLB के फाइनल्स दे रही थी. Now thankfully I'm done with it. So advocate Mavra Hussain. Pleasure meeting you, advocate Mavra Hussain. So आप लोग दो बहनें और एक भाई हो। दो बहनें और तीन हो आप। हाँ, अब हम दो, मेरे लिए we are 2 sisters and 2 brothers because फरहान भाई is very much a brother for me. So हाँ, but otherwise कौन है? उर्वा 1 साल बड़ी है मुझसे। फिर तुम? फिर मैं, फिर छोटा भाई। ओह, सो भाई तो बुली होता होगा। भाई को हमने बहुत बुली किया, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। आई होप ही वॉचेस दिस एंड आई कैन ऑन रिकॉर्ड अपोलोजाइज फॉर बुलिंग हिम। सो कितने अरसे लगा चला ये बुलिंग का फेज? आई थिंक टिल ही मूव टू सिडनी नाउ विद माय पेरेंट्स। जब तक वो वहाँ रह रहे, अब चले गए हैं। अच्छा। भाई वहाँ पढ़ रहा है, डैड वहाँ काम कर रहे हैं। पैदा मैं पाकिस्तान में ही हुई हूँ, सब यहीं रहे हैं पूरी जिंदगी, बट जस्ट ऑफ लेट एवरीबडी मूव्ड। भाई की पढ़ाई वहाँ चल रही है, तो जब से वो वहाँ गया है, सिडनी हमसे दूर गया है, तो उसकी बुलिंग रुक गई है, क्योंकि हम साल में 1 महीने के लिए जा फोन पाते पे करते हो बुलिंग? फोन पे तो करते हैं, जब साल में 1 महीने के लिए जाते हैं तब भी करते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे रेगुलरली हर वक्त की जो। So who was the naughtiest? I would like to believe I was, but I never got caught. Who got? You know, तो फिर like the other two were under fire. Who got caught? I think Urva would get scolded for बेटा आप तो बड़ी हो, ख्याल रखो, and my younger one would get scolded for बेटा आप तो भाई हो, भाई बड़े होते हैं, ख्याल रखो। So मैं ना बीच में से शरारतें करके निकल गई, तो मुझे कभी ज्यादा डांट वांट नहीं पड़ी। पिटाई हुई कभी? मेरी तो नहीं हुई, छोटे की शायद हुई भी है। अच्छा। हमारी मतलब उर्वा और मेरी। तो किस तरह का घर था? What kind of a family you are? I think we were very very tight, all 3 of us, and we were brought up by our mother. So मामा के साथ हम तीनों बहुत ज़्यादा tight हैं। मतलब I think I've never felt that parent-child relationship with mom. I've always felt that it was a very friendly relationship. We were always friends. तो discipline नहीं था तुम लोगों? नहीं, घर में हम हमेशा फ्रेंड्स थे। You know when I used to look at my other friends, और वो मुझे बताती थी कि हमें तो रात को देर से जागना भी अलाउड नहीं है, और हमें तो ये भी अलाउड नहीं है, यहाँ जाना भी अलाउड। तो मैं मामा से अक्सर पूछती थी कि मामा कोई चीज़ है जो हमें नहीं अलाउड? ऐसा कुछ नहीं था। अम्मा वुड ऑलवेज आस्क अस कि बेटा क्या करना, हमसे पूछती थी, एंड वी वुड लीड एंड शी वुड जस्ट बी वॉचिंग आउट फॉर अस। सो शी जस्ट वॉन्टेड कि बच्चे जो भी करें मुझे पता हो। तो वो हमारे बहुत क्लोज रहती थी, हमारे ऊपर उस तरह रिस्ट्रिक्शंस या उस तरह पेरेंट चाइल्ड का डिस्टेंस नहीं था कभी भी। तो कैसी गपशप होती थी? क्या डिस्कस करते थे? हर तरह की गपशप, हर चीज। आई थिंक मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैंने मामा से डिस्कस ना किया। So every kind of conversation. So there were no secrets and there were no diaries. You know, sometimes I tell mama कि you know जब अपनी friends को देखती हूँ कि वो अपने parents से छुप के कुछ करिए, मुझे कभी-कभी curiosity होती है कि कैसी feeling आती होगी। कभी स्कूल बंक किया? कभी नहीं। कभी नहीं किया? नहीं। So there is no secret diary. I'm just so sorry to disappoint you, but I wish I had had some fun in my teenage और school, या कोई उल्टी सीधी हरकत की होती जो मैं आपको बता सकती। तो बचपन में कैसा? बचपन में बस मैं तो साइकिलिंग करते थे। गुड़ियों से मैंने बहुत खेला है। आउटडोर आई थिंक मैं खेलती थी till I used to play with my brother. Then I switched to dolls. You know how all girls switch after some time. But I was a very studious child. और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मेरे रिजल्ट डे पे अम्मा स्कूल जाती थी और टीचर्स बहुत उनको कहती थी ना कि आपकी बेटी बहुत लायक है और आपकी बेटी ने ये किया और इतने मार्क्स आए, तो मम्मा की आंखें चमक जाती थी। तो मुझे उसकी बड़ी लालच हो गई ओवर टाइम कि बस मेरा रिजल्ट आए और मम्मा पागल हो जाए खुशी से। सो आई थिंक आई वाज दैट, वो जो एक पेरेंट्स पेट नहीं होता एक घर का बच्चा, कि मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लूँगी और मैं सबसे ज़्यादा आई विल बी द रीज़न ऑफ माई मॉम्स हैप्पीनेस। But then we all followed suit. मतलब my sisters also like that. कि you know I think we always want to achieve for our mom. It just makes us so happy. जैसा मैंने convocation की बात की, तो convocation से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि mom will attend it and I want to see how she will look at me. मुझे हैरानगी हुई है कि तुम
फैशन पढ़ना चाह रही थी. You know, I was very confused after. And then law में चले गए. Yeah, but this is also, see, this freedom you only get from your parents. I wanted to become a doctor. I had 87% marks in my FSC. अच्छा. I tried to do it. Then I thought it's not for me. I dropped out. Then I thought maybe fashion designing is for me. I tried doing it. I dropped out. Then I started acting. It worked for me. I liked it a lot. I found my passion in it. एक्टिंग में कैसे आए? क्या स्कूल में? स्कूल में I was very actively in co-curricular. लेकिन हम लोग, मैं और उर्वा दोनों, क्योंकि हम लोग हर चीज़ साथ साथ करते थे, क्योंकि हमें परमिशन ही तब मिलती थी कि साथ चले जाओ तो अलाउड है. तो मैं और उर्वा दोनों हम लोग इस्लामाबाद में थिएटर प्लेस करते थे. इफ़ यू हर्ड ऑफ मैरी पॉपिन्स एंड शिकागो एंड ऑल दीज प्लेस जो होते थे इस्लामाबाद क्लब में, तो उनमें हम लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे. फ्रॉम देयर ऑन फिर हम लोग ATV पे, क्योंकि ATV वॉज वेरी क्लोज टू आवर हाउस, तो हम स्कूल के बाद वहाँ पे एक शो होता था, म्यूज़िक शो बच्चों के लिए, उस पर सॉन्ग्स प्ले करने होते थे, वो हम होस्ट करते थे ऑल्टरनेटिवली. पहले उर्वा ने किया, फिर उसके बाद मैंने किया. वहाँ से उर्वा गॉट सिलेक्टेड. माई स्टोरी इज़ रियली इंटरट्वाइंड विद उर्वाज. उर्वा गॉट सिलेक्टेड एज अ VJ फॉर ARY म्यूजिक. सो शी वेंट टू कराची. I missed her too much, dropped out of everything, went after her to Karachi. And that's how we both started working, like acting mainstream. And that's how we got the offer and we started acting. But uske baad there was no looking back. There was no looking back. I think we both found our passion in it. कुछ चीज़ें होती है जो आप शायद अनकॉन्शियसली विश कर रहे होते हो अपने लिए, बट शायद आप उनको लॉजिकल या प्रैक्टिकल नहीं समझते, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. बट सून आफ्टर वी स्टार्टेड एक्टिंग वी न्यू दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू. दिस इज इट. दिस इज इट. यस. पहला क्या काम था? I think I figured my happiness when I started appearing on TV, even as a host for ATV. पहले होस्ट. Yeah, I was quite young when I started. पहला ड्रामा क्या था? पहला ड्रामा था मेरे हुजूर for ARY. तो लाइंस किस तरह याद होती थी? वो तो रट्टू तोता थी ना मैं कॉलेज से. मैं आपको बता तो रही हूँ, मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, तो रट्टे लगा के दैट हेल्प. और मैं जब नया मैंने काम करना शुरू किया. कैसे बनाया फिर? हाउ डिड यू अंडरस्टैंड? आई डोंट थिंक आई अंडरस्टूड इट एट दैट टाइम. आई डिड नॉट. It will be wrong if I claim that today. For the first 3-4 years, from you can say from 2012 to even 15, I was just doing it because I really enjoyed being in front of the camera, and I just loved the attention, the process. And I loved the the audience and how they reacted towards me as soon as they started recognizing me. The entire process, I fell in love with it, so I just kept on doing it on repeat. Didn't understand the seriousness of it. It's only after I went for my Indian film and I had long acting sessions with them and like workshops with them, I actually understood what this medium really was. Actually, before my movie, I shot this serial with Haseeb Hassan, Aista Aista, and we went to California to shoot that. So isolation kind of taught me what acting really was. I don't think I still understand it completely, but now I have my heart in it completely. Now if I've shot Jawani or if I've shot Angan, it consumes me. Or Sammi. Yeah, or Sammi. It consumes me completely. Now I can give all of myself to my character, I think. Or I try to. पहले शुरू में तो it was just fun and games. Yeah. Do you read your entire script? Ehtisham, a bhai who's directed me in Angan, you can ask him. I've really tormented. I've really tortured him. हर सीन से पहले 100 सवाल कि ये, क्योंकि वो एक एरा फर्क है, हमें नहीं पता. Many times, not once, many times. और कितना सर खाती हो डायरेक्टर? बहुत ज़्यादा. मैं बिल्कुल डायरेक्टर्स एक्टर हूँ. आपने तो मुझे देखा हुआ सेट पे. मैं बहुत, I think I really torment my directors. क्योंकि मुझे I have to take the lead from them. I cannot create on my own. मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपना ही कुछ मेथड करने चली जाऊँ और मैं एक्टर हूँ और अब मुझे पता है मैंने क्या करना. ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे साथ. तो पहले क्या करती हो? पहले अपने कपड़े सबसे पहले is the script. You constantly read it. There's this book 40 Rules of Love. I read that book when I was 19. Then I reread it when I was 21, and then I kept rereading it for many times. I realized that आप कोई भी टेक्स्ट जब बार पढ़ते हो, आपको हर दफ़ा उसमें से कुछ नया मिलता है. ये मैंने उस बुक को पढ़ने से रियलाइज़ किया. So I thought maybe I should apply that to my scripts.
and now I reread my scripts to get a better understanding. So for Angan मैं count भी नहीं कर सकती कि मैंने कितनी दफा ये script पढ़ा है, क्योंकि मैं इतनी nervous थी to take on something as big as Angan and the character that I'm playing, because she's basically leading the entire narrative, and it's from her eyes you're seeing that era. तो मेरे लिए बहुत pressure था और बहुत मैं nervous थी. तो I think I reread it to completely understand खुद भी रिसर्च करती हो कि नहीं, I follow my director कि ऐसी होगी, लुक ऐसी होगी, इस तरह के कपड़े होंगे, इस तरह के बाल होंगे, इस तरह का मेकअप होगा. I think we have a very privileged job. कैसा दिखना है, कैसे बाल होंगे, स्टाइलिंग क्या होगी, वो सोचने के लिए और लोग हैं. मुझे लगता है कि जिन कामों के लिए कोई और है उसमें मैं पढ़ूँ ही मत. अच्छा. ताकि मेरा कोई इतना सा भी पोटेंशियल उन चीज़ों में ज़ाया ना हो जो करने के लिए और लोग हायर्ड हैं. अच्छा. So the only job I have on a set is to act well. So I try to completely keep myself occupied with just that. Okay. And I'm just always found closer to my director because I'm always asking questions on what should I do, if I can add this hand movement, or if you think I should do something. Whenever you see Ehtisham Bhai, who's directed me in Angan, you can ask him. I've really tormented. I've really tortured him. हर सीन से पहले 100 सवाल कि ये, क्योंकि वो एक एरा फर्क है, हमें नहीं पता. और सबके साथ रिहर्सल करते हो. बहुत enjoy that. हाँ, I think all the actors now understand the responsibility that we have on us. Even if there's a single loophole in one project, now it's really pinpointed and highlighted कि ये गलत हुआ. तो अब सब वो responsibility seriously लेते हैं. We all sit down. We all rehearse and re-rehearse, and then especially for something like Angan, we had to kind of understand that time and that era, the tragedies of independence and all of that, ताकि थोड़ी deep understanding हो, so we look like it, so people believe that we are those people. Angan was a lot of hard work. हाँ, because उससे फिर आप खुद भी तो बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं. हाँ, मुझे लगता है हर प्रोजेक्ट के बाद आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है. पहले मैं इस बात से थोड़ा डरती थी कि ये क्या है, मैं जहाँ से जिस जगह से गुजर जाती हूँ, जिस प्रोजेक्ट से या जिस फेज ऑफ लाइफ से, उसके बाद मैं डिफरेंट इंसान बन जाती हूँ. मैं तो अपने फ्रेंड्स को मेरे लगता है कि मैं तो कोई और हो गई हूँ. तो इस तरह कितने दिन लगाती हो टू कम आउट ऑफ अ कैरेक्टर? I don't think you ever come out of your characters. If I've learned something from a character, like say in my Indian movie I keep referring to, because there was also a lot of isolation. I think सबसे ज़्यादा आपको impact चीज़ तब करती है जब आप अकेले होते हो. So that was away from family. For the very first time in life, away from Urva. Your sister was not there. That was so difficult for me. तो उस isolation में I grew, I changed. और फिर आपके siblings और आपके parents तो they don't mind if you've changed, but the people around you and the people, even the people who matter, but they're not your family, so they kind of I think accuse you for being changed so quickly. तो वो मुझे समझ में अभी तक नहीं आता कि ये ग्रोथ, मुझे लगता है कि ग्रोथ बड़ी अच्छी चीज़ है, चेंज होते रहना इज ग्रेट, बट आई डोंट थिंक पीपल अराउंड अस स्टिल अंडरस्टैंड दैट. नहीं, वो जो जहाँ से हम गुजरते हैं एक्टर्स, आई थिंक वो नहीं समझ सकेंगे. ये बात भी मैं आपके अलावा शायद किसी और इंटरव्यू में भी कहूंगी तो जो एंकर होगा वो सोचेगा व्हाट इज शी इवन टॉकिंग अबाउट. क्योंकि आप एक्टर हैं और यू बीन थ्रू so many projects. If you give something to the character gives you something back. Yes, and it changes you completely. आपके beliefs, आपका behavior, आपके आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, and then you have to be okay with it. कोई ऐसा कैरेक्टर जो सताता रहा बहुत देर तक? I think the character I played in my Indian movie, because she was a sick girl and then she was depressed. She had उसकी जिंदगी में there was lack of love, and then she dies, and the death scene was the climax, so we shot 3 alternative death scenes. That took a huge toll on me. I didn't think, उस टाइम करते हुए नहीं लग रहा होता कि कोई बड़ी बात है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने फिल्म देखी होगी वो सोचेगा ओ बेचारी मावरा किस चीज़ से गुजरी होगी, ऐसा कोई नहीं सोचता. They just see the scene, they leave the film there and they go. But what you go through for dying, or what you go through for being so sad and miserable in a character कि बेचारी हूँ मैं और मैं बहुत ही कोई नहीं है इसकी ज़िंदगी में और ये इसको माँ बाप ने भी छोड़ दिया, to feel that all that rejection and then to make people believe that you are a rejected person and you are that, it kind of becomes a part of you. So that takes a toll on you when you're not like that in your real life.
You know, when I came back from Bombay and I used to chill with my siblings, I used to chill with Urva and Farhan bhai, they used to be so worried that I have gone so quiet. Because, you know, dying so many times over and over kind of affects you. You know, I learned something and I would share this with you because you're a fellow actor. मैं एक वॉइस ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो मेरा सबसे बड़ा जो डायलेमा था वो ये था कि मैं कैरेक्टर्स घर ले आती थी, और उस ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और इमोशनली डिस्टर्ब लोगों के रोल्स कर रही थी. सो आई आस्क्ड फॉर, दुनिया भर से एक्टर्स आए हुए थे, एंड आई आस्क्ड फॉर अ स्पेशल सेशन विद देम, how to unwind and how to come out of your character. And what I learned from each one of them was that when you come home, आप एक इस तरह का रोल जैसा ये किया है, when you come home, आप बिल्कुल उसका मुख्तलिफ कुछ करें. हाँ, क्योंकि आप वो घर उसको कॉन्शियसली उसको हटा लें. जैसे बच्चों से खेलें, जैसे म्यूजिक सुने, जैसे पॉटरी बनाएं, मुझे लगता है ये चीजें आपको नेचुरली अट्रैक्ट भी करने लगती हैं. जो आप नहीं हैं वो करें. जैसे अगर आप उस कैरेक्टर में कुछ नहीं थे तो आर्ट करें, स्कल्पचर करें, यू नो, इट्स अमेजिंग. कुछ नहीं तो पेट रखें, उससे खेल लें. और या फैमिली में बच्चे हैं तो उनके पास चले जाएं. It's so funny that I did all of this. Yes, because ये मैंने लर्न किया, because I did bring in a lot of my. I didn't consciously know कि मैं क्या कर रही हूँ, but I think I tried to unwind on my own. But right after Sanam Teri Kasam, I did Sammi, which was again a girl जो वन्नी हो जाती है और उसके घर वाले उसको अंदर. हाँ. तो मुझे सम्मी के बाद लगा कि मे बी आई कैन नेवर एक्ट अगेन. आई यूज्ड टू सिट एंड चैट विद उर्वा एंड फरहान भाई बिकॉज वी लिव टुगेदर थैंकफुली. तो बड़ा एक दूसरे से हम कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं अबाउट वर्क and things that maybe other people, if I had siblings from other fields, they wouldn't have understood. Maybe, but because they're actors, she's an actor, he's an actor, he's a singer. You know, everybody's from a creative. Your brother is a singer? Brother-in-law. Oh, brother-in-law. Farhan. हाँ. And so, bhai actor. Little one studying. He's still doing his bachelor's in accounts. So अभी वो देखें क्या करता है जिंदगी में, वो भी कुछ मजेदार ही करेगा. उसके अंदर भी क्रिएटिव कीड़ा है. पहला चेक कितने रुपए का मिला? एक्चुअली हमारा पहला चेक हमें साथ में मिला था मुझे और उर्वा को, तो वो एक ही चेक था 16,000 का. क्या किया था दोनों ने? पता नहीं, आई थिंक मामा को दे दिए. मामा को दिए थे, पर मामा ने क्या कर, मामा ने हमारे ऊपर ही खर्च किए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो अच्छा लगता था ना टू प्रेजेंट टू हर. व्हाट मेक्स यू हैप्पी, रियली हैप्पी? आई थिंक व्हेन आई सी माय मदर हैप्पी, that's my you know, that's the absolute happiness that I've ever felt. Every time, because you know, now with my LLB final year and my films dates clashing, I wanted to do it next year, and I called my mother and I said कि मामा मेरा एग्जाम से 20 दिन पहले तक फिल्म का स्केड्यूल है और बुक्स बहुत ज़्यादा हैं इस दफ़ा और मुझसे नहीं होगा. एंड यू नो, पहले उनका ये पैटर्न है, वो पहले कह देती हैं हाँ आपकी मर्जी है बेटा मत करो. एंड देन शी कॉल मी एंड शी सेड हाय मैं तो सोच रही थी कि मैं इस साल के एंड में अपनी बेटी की कॉन्वोकेशन पे जाऊंगी, और यू नो इस तरह की जब वो बातें करती हैं तो यू वांट टू गिव योर लाइफ फॉर इट. यू नो, यू वांट टू टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन टू मेक हर हैप्पी. एंड आई थिंक दैट्स द एब्सोल्यूट हैप्पीनेस फॉर मी एंड उर्वा बोथ. अम्मी को खुश करना है. हाँ. और खुद के लिए क्या करना है? खुद के लिए को क्या ख्वाब है? अम्मा खुश होती है तो हम भी खुश रहते हैं. तो क्या ख्वाब क्या है? जब when you were छोटा सा बेबी तो क्या ख्वाब थे उस वक्त? क्या बनाना था? कोई जहाज, कोई डॉक्टर, जैसे यू सेड कि डॉक्टर बनना था? हाँ नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ख्वाब बहुत वेग थे. मुझे शायद इसीलिए पूरी तरह पता नहीं था कि दुनिया किस चीज में मेरा पैशन है. हाँ, दुनिया मुझे हमेशा से कहीं सी आइलैंड पे. और मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा से उर्वा के ख्वाब चोरी करती हूँ. मैं इतनी उससे सच बोल रही हूँ, मैं उससे इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड हूँ कि जो उर्वा का करने को दिल करता है ना, वो 6 महीने बाद मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं करूँ. इट्स एक्चुअली बिन अ पैटर्न नाउ. आई डोंट नो व्हाट शी विल फील अबाउट मी सेइंग दिस. आई हैव नेवर सेड दिस टू हर आल्सो. बट उसको कोई ड्रीम होती है ना कि वो हमेशा से बचपन से कहती थी ओ आई विल ट्रैवल, मैं बहुत ट्रैवल करना चाहती हूँ. तो स्लोली मुझे लगने लगा कि मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ. I think you guys are twins. I think we are twin souls. हाँ. हमारी souls. मगर थोड़ा देर आगे पीछे हुए हो. मैं थोड़ी कॉपी कैट भी हूँ. सच जो बात है, क्योंकि मुझे उर्वा के डिसीजंस इतने सही लगते हैं कि I want to, you know, it's just the fear of being wrong. क्योंकि मुझे पता है कि उर्वा is always right. I've seen it in the last many years. She is just always right. So I want to do the right thing. Are you ever jealous?
I'm never jealous. I'm always just looking up to her that how are you always right? What do you do? But she's intuitive. She's when if you interview her like this, you'll know she's very intuitive. उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और इसीलिए शायद उसके decisions ठीक होते हैं. तो मैं उसके decisions copy करती रहती हूँ. कि अच्छा उर्वा ने उडारी की अब मैं सम्मी करूँगी. इस तरह के छोटे छोटे डिसीजंस जो मैं कॉन्शियसली नहीं करती. अब मैं पैटर्न रियलाइज कर रही हूँ. I wouldn't call it copying. I think you get inspired a lot because I think she gives you the courage. Yeah, no, I'm jokingly saying that I copy her, but of course she's the only one who gives me this much courage. She has always seen the best in me. She realized my talent when I didn't. When I was busy figuring if I should be a doctor or a fashion designer or this or a that, she thought I was gifted. She thought I should be an actor. It's her who leads the way, and I'm just so grateful for that. If it wasn't for Urva, I wouldn't be anywhere in my life. Have you ever hated anything or anybody? Yeah, it's a very. I realize that it's a very strong emotion, but I've often felt it for a group of society that tries to undermine other people's hard work. I've really felt it for people who try to categorize you if you're an actor, or if they try to put you down because you're an actor, or look down upon you because they're not you. These things really, I don't hate them. It just hurts me. I just feel इफेक्ट करता है ये जितना सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया से ज्यादा मेरे करीबी लोग तो नहीं, बट इर्द गिर्द के कुछ दूर के लोग भी होते हैं ना, जो आपको पता होता है कि इन देयर हार्ट्स दे वांट टू डू व्हाट यू आर डूइंग बट दे स्टिल प्रिटेंड लाइक ओ एक्टर नहीं जी हमारी बेटी तो डॉक्टर है. दिस हर्ट्स मी कि अगर आपको पता हो कि हमारे एक प्रोफेशन को कि हमारा प्रोफेशन हमें कितना कंज्यूम करता है और हम कितनी मेहनत करते हैं. ठीक है, privileged job and all of that. Hours हैं हमारे. Exactly, they don't know. It's just very easy for them. हमारी नींद हमारी नहीं, हमारे दिन हमारे नहीं है. And at the same time, we are creating something for their entertainment. अगर कोई और प्रोफेशन में कोई हार्ड वर्क कर रहा है, it's not entirely for someone else's entertainment. We devote our lives. I can't say that today because I've just started out, but I can talk about you, I can talk about Sabah Hamid, I can talk about many names who have given their entire lives to entertain you guys, and it takes you guys a second to judge this profession. This hurts me. I think this is something I've felt a lot of. Again, I don't like using the word hate, but yeah, it's something that bothers me. It hurts me. Do you forgive easily? I actually, it's very rare that I actually don't want to forgive somebody. It's rare. So when that's there, then I don't want to forgive. It's a choice. वैसे I can randomly forget. I can overlook things. मुझे ज़्यादा चीज़ें affect नहीं करती. मुझे ज़्यादा लोगों का behavior affect नहीं करता. लेकिन जब कभी करता है तो फिर वो दिल में रहता है. किस बात पे stand लेती? I think when people come in the way of my dreams, my dreams are very precious to me, and like I said, I churao-fied them from Urva. So it's something that I've worked on. It's something that I've worked really hard on, and I hope I have a long way to go, and I'm ready to work hard for that. So when people try to come in the way of my journey or my dreams, I think that's something, and just for the heck of it, they have no gain, no loss of it, but just to bother you, I think that affects me. अभी आगे कहाँ जाना है? I think मुझे बस बहुत काम करना है. मैं चाहती हूँ कि मैं one day when I'm 80, I'm shooting. I'm shooting something. I still have these cameras in front of me. I have the connect I have with cameras. I don't have it with anybody. So my relationship with the camera, I find it very interesting and it's very precious for me. क्योंकि जितना comfortable मैं कैमरा के सामने होती हूँ, उतना मैं इतनी बात कर ही नहीं पाऊंगी अगर ये बंद होगा. And even while performing, I feel that all the emotions I've felt while acting, I've never felt them otherwise. So what this camera life and this career has given me is very dear. So what do you collect? पहली मोहब्बत कब हुई? I think I was 14. किससे हुई थी?
एक शख्स से तो क्लास में था या नेबरहुड में था या कजन था? I knew him through somebody. What do I collect? Memories. Because we have to so quickly change and move on. Yeah. I try to live every moment fully. So I have a very clear memory of it. तो ऐसी क्या चीज़ है जो बचपन की अभी तक साथ चल रही है? I don't think I've held on to things for that long. I haven't. I think I have my world complete in my parents and my siblings. I don't think I've been ever. कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट नहीं है, कोई गुड़िया, कोई स्टफ टॉय? कुछ भी नहीं. मुझे पता नहीं. मुझे अभी आप कह रही हैं तो मैं सोच रही हूँ. मुझे लगता है कि अपनी जर्नी पे कुछ लोग लेके जाते हैं ना अपनी चीजें साथ बचपन की. नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा अम्मा ने इंस्टिल किया है हमारे अंदर टू वैल्यू जस्ट रिलेशनशिप्स. You know why me and my siblings are so tight is also because of what mom taught us. So मुझे लगता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे इतना एम्फेसाइज किया उन्होंने कि शायद हमारा चीज़ों पे ध्यान नहीं गया. शायद ये मैंने अभी सोचा. के साथ भी चीजें बदलती भी गई. And you didn't miss them. हाँ, and like I'm telling you, it's very funny how often I change now. So to hold on to things would be really strange. I don't think I'd like. Did you always dress up? Yes, I loved it. I always loved it. On my school farewells, they were a big deal for me. I loved dressing up. That's why I could see that you thought कि fashion होना चाहिए. Because I can see the way you are, and I've always seen you. Today I'm dressed up specially for you. Oh, thank you. And I love your jewelry. And you know, मुझे लग रहा है कि that you like dressing up and you love jewelry. So collect करते हो चूड़ियाँ और jewelry और खुस्से. I love your खुस्सा too. आप परेशान हो जाएंगे लेकिन मैं खुस्से और चूड़ियाँ भी उड़वा के चुराती हूँ. You know, she's the one I have. She has the best things. What do I do? Even if I'll go buy them myself. So size एक ही है? हाँ. Alhamdulillah for that. हाँ, इसका कितना फायदा होता है ना? बहुत. मुझे तो बहुत फायदा होता है. उसको शायद नुकसान होता है थोड़ा. You share the room? We used to till she got married. Oh, now she's married. Yeah. But did you? But I still live with them because I cannot even imagine a day without Urva. So now I'm as tight with Farhan bhai. And since my parents and my brother are away, they are my only family here. So yeah, I'm very, very close to them. पहली मोहब्बत कब हुई? I think I was 14. किससे हुई थी? एक शख्स से. तो क्लास में था या नेबरहुड में था या कजन था? I knew him through somebody. Okay. Through a friend. तो क्या करते थे उसके लिए? गाने गाते थे या? मैं गाने गा ही नहीं सकती. मैं गाना गाऊंगी तो मोहब्बत वही खत्म हो जाएगी. मैं एक्चुअली गाने सुनती बहुत. अच्छा. मुझे बहुत मजा आता है कि जब मैं लाइफ में किसी. So what did you say? Do write letters or did he write you letters? No, I never wrote letters. I think at max I wrote emails, but not letters. And then we have all these WhatsApp and BBMs and messages. I think they took away the charm of letters. I still hope that I can fall in love so much that I write a letter to someone. And if I do, I'm going to call you and tell you that, see, you triggered that thought. It's so special writing a letter. It is like going on a train. Have you gone on a train? I mean, yeah, abroad, not it here. It is so romantic. It is. But it's so funny that I've been on all these trains with my siblings. So yeah, because you can go away in it. Yeah. आप बैठे हैं वो एक जैसा आपके पास से गुजर रही हैं चीजें and आपका दिमाग फिर कहीं और चला. जैसे किताब में जब आप किताब पढ़ते वो भी उतना ही रोमांटिक है. मुझे किताबें बहुत है ना. किताब पढ़ते they take me away from life. आप कहीं और जा सकते हैं ना. जहाज में आप कहाँ जा सकते हैं? When I want to disconnect from life, books are at my rescue. Books disconnect me. So कोई आया ऐसा जिसके लिए खत लिखो? खत अभी तो कोई लिखा नहीं है. लिखना चाहती हूँ. अल्लाह करे लिखूं. तो फिर कोई नहीं है? You are not in love with anyone? I think I'm in love, but I love the idea of love. I think falling in love is so beautiful. And I was just going to tell you that whenever I'm in love, or let's say if I'm going on a new project, or see how easily I compare love in my projects. That's how much I love my projects. But so whenever I'm going on something that's making me really happy, I listen to new songs. पिछले छोड़ के, क्योंकि पिछले तो अब पुरानी बातें या पुराना एक्सपीरियंस याद करा देंगे, तो कुछ नया, जो भी कुछ नया गाना अच्छा लगे तो I listen to them on repeat. And like you asked me if I sing songs, I listen to them and I daydream. That's what I do. कि मैं गाना गा सकूंगी. हाँ, मुझे लगता है शायद इसीलिए मैं मूवीज में भी
लिप सिंक करना इतना एंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं आई डोंट थिंक मैं कभी भी रियल लाइफ में गा सकती हूँ. क्यों? पता नहीं मुझे. कोई भी गा सकता है. आई होप सो, आई होप दैट्स ट्रू. हाँ. फरहान भाई कहते हैं तुम बैठो रियाज करने की कोशिश तो करो. तो मैं भाग जाती हूँ. मेहनत लगेगी ना, ऐसे थोड़ी. हाँ, लेकिन मुझे अपनी आवाज़ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू इवन sometimes deliver my dialogues because I have a very sensitive throat and if I've given like a big monologue the previous night अगले दिन मेरा गला बंद हो जाता है. तो फिर I have to have kahwas and green teas. अब रियाज के बाद कौन इतनी मेहनत करेगा. So जब बाजार जाती हो तो क्या चीज़ उठाती हो सबसे पहले? क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? जूते. मुझे जूते खरीदना बहुत अच्छा लगता है. जूते खरीदती रहती हूँ हर वक्त. सब पहनती हो? हाँ. सब पड़े रहते मैं हैं? जूतों से स्टाइल करना शुरू करती हूँ. अच्छा. कि ईद पे मैंने ये वाला गोल्डन खुस्सा पहनना है तो अब कपड़े डिसाइड होंगे. या अगर उर्वा की बर्थडे पे मैंने ये वाली हील पहननी है तो अब इसके साथ कपड़े डिसाइड होंगे. अच्छा. ऐसे. और उसी की अलमारी की तरफ जाती होगी कि वहां से निकाल. उसकी अलमारी तो मैंने बचपन से नहीं माफ की. बट आई एंजॉय इट सो मच. यू नो आई टेल उर्वा दैट आई सेड इवन इफ आई हैव दैट सेम वेरी थिंग इन माय ओन कबर्ड, जो खुशी मुझे मिलती है ना टू पिक इट अप फ्रॉम योर कबर्ड, जो मुझे सुकून मिलता है टू वेयर योर थिंग्स, ये मैचलेस है बिल्कुल. कभी मना किया उर्वा ने? शी लव्स मी टू मच एंड आई थिंक आई एक्सप्लॉइट दैट. मुझे नहीं याद कि उसने कभी मुझे कहा हो. कभी लड़ाई हुई? लड़ाइयाँ तो ऑफ कोर्स वी फाइट लाइक नॉर्मल. तो कौन मनाता है पहले? You know, I wouldn't call it a लड़ाई क्योंकि there's a very clear understanding of Urva being right. So even while I am having a quarrel with her, I know she's right. So वो बड़ा guilty conscious होता है फिर कि अभी 2 मिनट बाद मुझे कहना पड़ेगा कि you were right. तो उससे बेहतर है कि अभी चुप कर जाऊँ. So sometimes वो चीज़ थोड़ी बढ़ती है, वरना most of the time I know that she's right. So I have to be the one who apologizes because I'm wrong. So if you're wrong, there's no shame in apologizing. I'm mostly wrong with her because she's mashallah so wise and somehow she's always right. When you look at her, you can feel that she's the quiet one. हाँ. है ना? हाँ. She's the wizard in the family. Oh yes, 100%. हाँ, वो लगता है. I think at least my life decision, all of the decisions, they are absolutely dependent on my sister. It's very difficult for me to take. मतलब अभी मैंने इन कपड़ों की भी पिक्चर भेजी है उसको. Is this okay? He's like, yeah, it's okay. So isn't it difficult? No. When you are on your own, because now she's married, now she's, उसकी अपनी जिंदगी है. और तुम्हें भी अपनी बनानी पड़ेगी. You will fall in love, you will get married, you will have a home. I mean, I thought that maybe these things. क्योंकि इतना फिर आप जब इतने ज़्यादा करीब होते हैं और जब independent होते हैं तो मुश्किल तो होता है ना. I don't know. I cannot think of a life where I cannot ask her everything. I would not understand that life mostly. So I'll always ask her these many questions. And also it's a very blessed space to be in, that somebody is always looking out for you. You know, कि आपको ठीक है, आपको at max क्या मुझे बात माननी पड़ती है तो कुछ भी नहीं है. Someone's always looking out for me and someone's always wishing my best. That's such a constant blessing that I've had since I'm born. Yeah, I would never. कुछ regret करती हो? Yeah, sometimes you choose people that you think are, they're not what you think. So investing so much time and energy and affection and compassion on those relationships is what I would regret. But then I read this somewhere that you'll never regret the love you give out, but you'll always regret the anger or the bad you do to someone. So yeah, with that belief, I've started to let go. But yeah, I think the most you regret is being misunderstood by people that you've given your compassion and love and affection to. आसानी से दोस्ती कर लेती हो? Do you trust easily? Not anymore. I think it's being a child or being younger is a bliss. Because you're ignorant of most of the things and what a relationship could take from you. You're unaware. लेकिन ये ज़्यादती नहीं है कि इंसान अगर कभी हर्ट हुआ हो तो फिर अपने आप को बदल ले, because it takes away the spontaneity क्या of being who you truly are. But don't you think it's natural
Don't you think it's natural that when you're growing up, now I can't think like the girl who I was when I was 8 or 14 or even 20, you know. When you're younger, you know less, so you worry less. The more you know, the more you worry, is what I feel. But I also think that worrying for yourself and taking care of yourself is very important. Because if you won't, who will? It's very, very important कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करें, आप खुद के इमोशंस को यू शुड फर्स्ट बी एबल टू लव योर ओन सेल्फ बिफोर यू. अपने आप को कैसे फील करती हो? नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, काम से? काम से. मुझे मेरा काम बहुत खुशी देता है. ये अजीब सी खुशी है जो मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट. आई जस्ट ऑलवेज होप कि क्योंकि अब दिल लग गया है ना काम में बहुत ज़्यादा, तो अब ऐसा समझ आनी शुरू हो. हाँ, अब जाके समझ आनी शुरू हुई है. तो मुझे अब दिल करता है कि जितना प्यार तब मिला है जब समझ ही नहीं आती थी और मिल जाता था प्यार और लोगों को काम अच्छा लग जाता था, अब ज़रूर मिले. अब वो विश आ गई है अंदर. अब आपका दिल करता है कि whatever you work hard on, when people watch it, you know, you wish and pray that they like it and they love it. Do you paint? No, I don't. And do you write? No, I don't. Do you read poetry? I read books. Okay. I don't read poetry. अब मतलब कुछ pop up कर जाए आपके सामने और फिर आपको फिर you follow that feed and if you like something. But otherwise I like you know, whenever I'm traveling. किताब कहाँ पढ़ती हो? टैबलेट पे पढ़ती हो? फ्लाइट में या एक्चुअली हाथ में किताब उठाती हो? नहीं. I have to read a paper book. हाँ. I can't read. मुझे नहीं, मैं हालांकि खुद मैं इस तरह की हूँ कि मैं आधी चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें पढ़ती हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे. But when I have to read a book, it has to be in my hands. और स्क्रिप्ट उर्दू में पढ़ती हो या? उर्दू में. शुक्र है. उर्दू में, और मैं तो उर्दू में लिख के भी देती हूँ लोगों को. क्योंकि वो कभी कभी स्क्रिप्ट रोमन में आते हैं और मुझे कुछ नहीं समझ में आते, तो फिर मैं लिखती हूँ. और मैं परसों एक गाना शूट करी थी विद सुहेल जावेद फॉर जवानी फिर नहीं आनी 2, और वो उसका प्रमोशनल सॉन्ग हम शूट करे थे. तो उन्होंने मुझे मेरी 4 साल पुरानी पिक्चर दिखाई कि मैं उनके सेट पे सारा रोमन स्क्रिप्ट उर्दू में कॉपी करके रख रही हूँ अपने लिए. तो मुझे कह रहे कि ये तुम्हारी मेरे पास एक पिक्चर है कि तुम स्क्रिप्ट कॉपी करी. कुछ चीजें पुराने जो है ना वो रखनी चाहिए, जैसे उर्दू स्क्रिप्ट है. यू नो माय मदर शी जैसे खत है, यू नो, जैसे टेलीफोन पे बात करना है अदर देन जस्ट सेंडिंग मैसेजेस. यू नो, आवाज सुनना. आई एम ऑल फॉर फोन कॉल्स. आई डोंट लाइक किसी की आवाज तो सुने, किसी को मिले तो सही. You know, my mother did her masters in Urdu and education and Arabic. तो मेरी बचपन से उर्दू बहुत अच्छी है. अब शायद मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम अपनी मर्जी की चीज़ें करने लगते हैं, मॉम से मैं दूर रहने लगी हूँ तो ख़राब हो जाती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं रहती शायद. लेकिन इसीलिए मैं सबको लिख के देती हूँ क्योंकि मेरी उर्दू राइटिंग भी बहुत अच्छी है और मैं यू नो आई कैन ऑफ कोर्स आई कैन. अपना स्कूल का पहले दिन याद है? स्कूल का पहला दिन. अब आपको लगेगा कि ये इंटरव्यू मेरे और उर्वा दोनों के बारे में है क्योंकि स्कूल भी, क्योंकि उर्वा स्कूल जा रही है, मैंने जाना है. आई रिमेम्बर माई सेल्फ वेरी वेरी वेगली. कितना फर्क है दोनों? 1 साल का. अगले साल चले जाना था मैंने, तो फिर अगले साल चले जाना था, बट नहीं, अभी जाना है मैंने, साथ जाना है. ऐसे कैसे उर्वा चली जाएगी और मैं नहीं जाऊंगी. सो आई थिंक मॉम ने जो उर्वा शायद अब प्रेप में जा रही थी तो अम्मा ने मुझे प्ले ग्राउंड में, क्योंकि मामा डिडंट, आई डोंट थिंक शी बिलीव्ड इन प्ले ग्राउंड. शी वांटेड टू कीप अस होम till we want to go to prep or 1 or you know like proper studies. वो playground और वो अब तो खैर बहुत कुछ आ गया, pre a lot of 2.5 साल में बच्चा स्कूल जा रहा है. हाँ, तो अब तो बहुत so many classes before prep. but तब उर्वा आई थिंक prep में जा रही थी और मैं तो रोना डाल दिया कि मैं तो कैसे, उर्वा को तो नहीं जाने, मैं साथ जाऊंगी. and I think that's when I went to playground. because I had to play group because they couldn't have taken me play group, because they couldn't have taken me in prep younger. So you remember the fact that you went with your sister? I think I cried that you remember your first toy? in that very did you buy it yourself या gift मिला था? मेरी जो फर्स्ट चीज़ मैंने खुद मामा के साथ जाके खरीदी जो मुझे याद है, that was a tricycle, a purple tricycle. वो मुझे याद है. लेकिन पहला टॉय जिससे मैंने खेला होगा वो आई थिंक वो वहीं प्ले ग्रुप में वो जो नहीं क्ले से आप खेलते थे, कप्स बना दिया, स्टार रखा, स्टार बन गया. आई थिंक दोज वर माय फर्स्ट एवर समथिंग आई प्लेड विद. तो अम्मी को या अब्बू को किसको पहले दफा बात की थी?
व्हाट डिड योर पेरेंट्स से कि जो पहला लफ्ज क्या मामा कहा या उर्वा कहा? ये तो मुझे, हाँ ये वैसे अच्छा सवाल है, ये मुझे मामा से पूछना पड़ेगा, क्या पता उर्वा ही कहा हो, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे बाबा कहते हैं, कुछ मामा कहते हैं। हाँ मुझे लेकिन पूरा शक है कि मैंने उर्वा कहा होगा। हाँ, जितना मैं उससे, आई थिंक आई एम रियली obsessed with her and I really truly I am grateful for having her in my life. Do you have a name for her? I call her बहना। बहना। Yeah. जिंदगी I've क्या always है? called her बहना। जिंदगी है family, family and the time you spend with them. I always feel कि जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, या even for that matter एक turbulent flight में होते हैं, तो the few people that you think about, they mean life to you. They are life. So whenever I've experienced in the, अब खैर turbulence से थोड़ा डर कम हो गया क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं, बट शुरू में भी मुझे लगता है कि the only few people I think about are my immediate family, are my siblings and my parents, क्योंकि those are the only ones जिनको फर्क पड़ेगा if you're gone. So अभी क्या क्या बनाना है जिंदगी में? Are you going to make a home for yourself somewhere? I don't fear it for myself. Okay. Like I said, that when you're in a turbulent flight and you're and even for a millisecond, if you're thinking that your flight's gonna crash or God forbid something's going to happen to you, you don't think about yourself. You don't think कि ओ कुछ होगा तो मुझे क्या होगा. कोई है ऐसा आइडिया कि I think I want to make a home here. किसी हिल की चोटी के ऊपर बनाऊंगी, या समंदर के किनारे या झील के किनारे? नहीं, वहाँ मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ट्रैवल के लिए जा सकती हूँ, वहाँ मैं रह नहीं सकती. You're a city girl. I just like staying very close to my family. I cannot even imagine living somewhere alone. Like I told you that isolation has almost always traumatized me. Not always in a bad way, but it has affected me always. You don't like farewells? No, I don't like being away from my family. Or going away or saying खुदा हाफिज, है ना? मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस डेट को अगर शूट के लिए जा रही हूँ तो मैंने इस डेट को वापस आ और जाना. अगर वहाँ पे ना आ सको तो रो पड़ती मतलब 19-20 आ ही जाती हूँ. तो रो पड़ती है अगर ना, हाँ आई थिंक इंडिया में, क्योंकि मैं पहली बार उर्वा से दूर थी बहुत लंबे अरसे के लिए, वहाँ पे मैं काफी दफा फोन करके रोई हूँ. So you're scared of being without family. Yeah. That is your biggest fear. Yeah, I think so. Yeah, or being without Urva is my biggest fear. Being without family. What is death? मौत क्या है? I think I'm very much at peace with the idea of death. It doesn't scare me at all. What I get, सबसे बड़ी जुदाई है ये. हाँ, लेकिन मुझे, that's what I fear. I fear it for my loved ones. I don't fear it for myself. Okay. Like I said, that when you're in a turbulent flight and and even for a millisecond, if you're thinking that your flight's gonna crash or God forbid something's going to happen to you, you don't think about yourself. You don't think कि ओ कुछ होगा तो मुझे क्या होगा. ऐसा तो आप, मुझे नहीं लगता कोई भी नहीं ऐसे सोच सकता, या पता नहीं, मैं तो नहीं सोच सकती. मुझे पहला ख्याल ये आता है कि उर्वा, mom, you know, parents, siblings. Are you close to your dad? I am, but I'm much closer to my mother. Okay. I'm close to him. Okay. But who's close? Close? Your brother? वो करीब है अपने अब्बू के? हाँ, I think now that he lives with both of them in Sydney, I'm sure he's closer than among all three of us. वो ही होगा. But I'm the closest to my अब्बू? He's actually very he doesn't interfere in our lives much. He lets us be, which is actually a great liberty and freedom. It's a blessing. Yeah, but you know how. But he keeps an eye. I'm sure he does, but that's also something he doesn't tell us. I'm sure he does, and I'm sure because mama से उनको सब update मिल जाती है, तो कभी इस तरह अगर उनको जब पता चलता है कि if I'm unwell on my set or if I'm you know, traveling despite being unwell or something, so he makes a call and he makes that effort to tell us that he's, you know, worried and all that. but mama को हर मिनट की खबर होती है. like mama को अभी पता है कि मैं आपके इंटरव्यू पर बैठी हुई हूँ, क्योंकि वो उनको सुबह फ्लाइट के टाइम भी पता था मैं क्या पहन रही हूँ, उन्होंने जल्दी से ये भी पूछ लिया. अम्मा को हर वक्त पता है कि मैं, उर्वा और इंस क्या कर रहे हैं, हर वक्त.
वो सारा यही कर- बस वो ना बताओ तो वो खुद ही कुरेद लेती है। हाँ, और मामा बहुत इंट्यूटिव है, मुझे लगता है मामा से वैसे भी कुछ नहीं छुपा सकते। अम्मा को वैसे ही पता चल जाता है, और मुझे इस बात से बहुत टेंशन होती है कि बजाय इसके कि वो पूछे भी, एंड अगेन वीव हैड दैट फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हर ऑल आवर लाइव्स कि हम उन्हें सब बता सकते हैं, सो देयर इज नो पॉइंट। Isn't that amazing? It is. Huh? I now realize that I always have a friend in her. Yeah. Always. मतलब उर्वा की life, obviously just like mine, is very busy. But mom is always just looking forward to our calls and just looking forward to having a video chat with us and looking forward to us visiting her. तो ये बड़ी blessing होती है कि एक इंसान है इस दुनिया में ऐसा जो हर वक्त बस आपको look forward कर रहा है, you know? Yeah. कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए सबसे important बात है। It also sets you free because आपने उनको please नहीं करना ना। It sets आपने you जाना- free and Yeah. at the same time makes you feel so important, you know? कि कोई है जिसको इतना फर्क पड़ता है कि आप हर वक्त क्या कर रहे हैं। आसान नहीं है मुझे, because of course I am not a mother, so I don't know उनका क्या कहाँ से वो सोचती हैं, but मुझे नहीं पता वो इतनी selfless कैसे हैं कि वो हर वक्त 3 बच्चों के बारे में सोचती हैं। सिर्फ जब से मैं जब से मुझे दुनिया समझ में आई है, this is what I've seen, that all she does is think about us and what we should do. Even when we used to go to school, she used to drive us to school. और उनको हर वक्त फिक्र, उनको मेरी बुक्स सिलेबस सब पता होता था कि मैंने अच्छा बायोलॉजी के 10 में से 8 चैप्टर्स कर लिए हैं, बेटा एक और कर लो। Like she would know everything. How? You know, it's a little unbelievable कि उनको, और जितना उनको मेरे बारे में पता है उतना उनको उर्वा के बारे में पता है, उतना उनको इंस के बारे में भी पता है। So I feel नाम कहाँ से आया इतने प्यारे? I told you she's done a master's in Arabic and Urdu and education. So I think she told us that she's collected all these names when she was studying. और ये हुसैन की हाय spelling अल्लाह, ये मेरी बेवकूफ़ी है। Really? No, I think it's very intriguing. Now it is. It is intriguing. Now it is. But मैं 7th And your father didn't mind it? No. ये मैंने छोटी, कहा, ये तो मैं- इतनी छोटी बातों से मेरे घर में कोई डिस्कशन भी नहीं होती कि ये ऐसा कुछ कर दिया। And oh my only you God. have it. No, या सबके Urva हैं? has it too. My brother doesn't. He thinks it's ridiculous. क्योंकि मैं 7th grade में थी और उर्वा और मैं एक ही स्कूल में थे। भाई was in a different school. तो मैंने एक दिन मैं अपना अटेंडेंस रजिस्टर देख रही थी और उसमें सारे नाम ना थोड़े मिलते जुलते थे। 3 Aishas in a class and 7 Saras. No offense intended, but you know, like some names are common. Yeah. So मुझे इस बात पे बड़ा होता था कि oh, there's no other Mavra that I know of. You know, I'm the only Mavra. But then I started realizing there are so many surnames that are Hussain. So many of them. Why? तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी अपनी 7th grade की, जो मेरी क्लास टीचर थी, if she's watching now, I wrote an application. I did my father's signature on it. उसमें लिखा हुआ था कि हमने अपने नाम की स्पेलिंग बदलनी है, तो आप स्कूल रजिस्टर में हमारी बेटी के नाम की स्पेलिंग चेंज कर दें। That's the first time. You wrote it and you Yes, signed it? I signed it. I signed it, gave it to my class teacher and made sure that she took it very seriously. कि you know, my grandfather said कि ये नाम की स्पेलिंग चेंज होने बहुत ज़रूरी है, and she bought it. She bought it, she changed it. It's only up till my it's only when I was doing my matric and I was supposed to get a certificate, mom said, are you crazy? Whatever you've done, but get that straight, you know, get your name right. And then I just got it removed because I didn't have the guts to go to my teacher again and say कि मैंने अब मेरे grandfather ने कहा। हाँ, तो मैंने कहा मैम अब उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपने नाम से। So my degrees have Mavra on it only. अच्छा। It doesn't even have Hussain, which is such a shame. But और पढ़ोगी? I don't know. Never say never. हाँ। I enjoy studying. It's my getaway. हाँ। I like working hard and seeing the results. That gives me a high. Can I see in the future a PhD? No, maybe a bar degree, maybe turning into a barrister, or maybe an LLM. But yeah, maybe. I wish you luck. Not right now. My dean at my school where I've done my law degree from, उनको मैंने बोला कि मैम मैं सोच रही हूँ मैं LLM करूँ, तो कहते तुम क्यों सोच रही हो ये? तुम्हारा इतना अच्छा करियर है, तुम्हें इतना प्यार है अपने काम से, तुम अपना काम करो ना यार। मैंने कहा अच्छा ओके if it's coming from my dean. अगर अम्मी ने कह दिया, अम्मा ने कह दिया तो फिर होगा LLM. No, I'm sure when she watches your
she of course no she convocation के अलावा वो हमारे काम से भी बहुत खुश होती हैं. She feels very proud. But what mom keeps telling us is that this life is meant to do so much. Yeah. That's what she tells us. वो ये नहीं कहती कि तुम अपने काम का हर्ज करके LLB और LLM करके दो. उनको मेरे काम से शायद उतना ही प्यार है जितना मुझे है. And if anyone in this world realizes कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ या हम सब कितनी मेहनत करते हैं, it's my mother. You know, she's seen me. She's seen me work when I've been unwell. She's seen me work under all weathers. She's seen me work in any country, flying to this country, to that country, and still shooting without sleep. तो मम्मा उसको बहुत वैल्यू करती हैं, लेकिन उनको लगता है कि बहुत टाइम है लाइफ में, टाइम ज़ाया मत करो. Do something of it. She said कि तुम अभी जवानी का schedule ख़त्म करके, you have a month, give your exams. I know you can do it in a month. So then I kind of pulled it off. It's her faith in both of us that shines via us, through us. It's been such a pleasure. मुझे बहुत मजा आया and I wish you all the best.